मोरे राम जो बज खुशी का है मौका खुशी का है मौका घर क्या करूं मुस्कुराना खुशी का है मौका घर क्या करूं खुशी का है मौका मगर क्या करूं से मुस्कुराना राम राम अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी
आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो कुछ कहना का मगर क्या कर मुस्कुराना है किसी का क्या करूं
और खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं, मेरे आंसुओं से खिला मुस्कुराना। खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं, मेरे आंसुओं से खिला मुस्कुराना। खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं, मेरे आंसुओं से खिला मुस्कुराना। मौका, मगर क्या करूं। खुशी का है मौका, मगर क्या करूं, मेरे आंसुओं से चोरी की मोहब्बत में अक्सर नहीं होता, दरवाजे से जाते हैं। चोरी की मोहब्बत में अक्सर नहीं होता है, दरवाजे से जाते हैं, निकलते हैं। चोरी की मोहब्बत
मेरे आंसुओं से किलो मुस्कुराना, खुशी का है मौका, मेरे आंसुओं से किलो मुस्कुराना, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मेरे आंसुओं से किलो मुस्कुराना, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मेरे आंसुओं से किलो मगर क्या करूं खुशी का मगर
राम भजो भजो सिया हो, भजो सिया हो। क्या यही प्यार करने का अंजाम है? क्या यही दिल लगाने का इनाम? यही प्यार। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। चोरी की मोहब्बत में सब यही होता, दरिया से जाते हैं से निकलते हैं। चोरी की मोहब्बत में सब यही होता, दरवाजे से जाते हैं। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी।
कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called बोलो बहन कैसे हो? Someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रूबी कहाँ रहते तुम? आती नहीं बड़े भैया की बात करने आए। संध्या बहन आप भी नहीं कल आए थे यहाँ। बोलो रूबी, ऐसे भूल जाओगे एक दिन भैया को, भूलो मत ऐसे। हाँ आज रूबी कितने दिन बाद आई बड़े भैया की लाइव में? बोलो। टाइम मिलता नहीं कि हम पूरा दिन लाइव रहते हैं। जब टाइम मिले तब आओ, इसीलिए हम दिन भर लाइव चलाते हैं। जिस बहन के पास जब टाइम होता है भैया से बात कर रहे हैं। ये तो 1 घंटे भर आते हैं हम। 11 बजे से लेके 8 बजे तक का लाइव में रहते हैं पूरा दिन। संध्या बहन कल कहाँ गए थे आप? भूलना मत। हाँ सब लोग मिलके एक साथ काम करो। सोनम का देखो चैनल मोटाई हुआ है, संध्या जी मालूम होगा ना आपको। हाँ कल शाम को भी नहीं आए थे यहाँ। और सब ठीक है। कल सोनम का चैनल मोनेटाइज हुआ है रूबी। हाँ तुम भी मेहनत करो, अपना चैनल मोनेटाइज करो, देखो पैसा बनने लगे उसके चैनल पर। हाँ सोनम के, सोनम ऑफिशियल फेसबुक पे। हाँ एक और बहन आती है प्रयागराज से। हाँ अब की दो, इस महीने में 2 बहनों ने बहुत अच्छा काम किया। एक सोनम ने, एक प्रयागराज से बहन है। हाँ। सोनम फेसबुक में है, सोनम ऑफिशियल, सोनम ऑफिशियल। सोनू की बहन जानती तो हो, सोनम नहीं है? सोनम ने हमारी भतीजी सोनम है। हाँ एक लोगों का फेसबुक से हुआ, सोनम का फेसबुक से हुआ है। और उसका जो शिल्पी राजपूत है बहन छोटी है, अभी पढ़ती है। तुम लोग तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ चुके हो। पढ़ती है, नौकरी तैयारी करती, प्रयागराज में रहती है, उसके बावजूद उसने चैनल मोनेटाइज किया है यूट्यूब से। हाँ आप लोग तो खाली खाना बनाना घर में रहता, कहती टाइम नहीं मिलता। खाना पीना बनाती, खाती हो, पढ़ती भी है, तैयारी कर रही है आगे। रूम लेकर रहना, पढ़ना। हाँ 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 हाँ। सोनू की बहन हमारी भतीजी है वो। एक इसका हुआ है, एक और बहन का हुआ है। हाँ प्रयागराज स्टूडेंट लाइफ। बहन आजमगढ़ की बहन है, वहाँ प्रयागराज में रहती है, पढ़ाई करती है, कोचिंग तैयारी करती है। संध्या बहन सुन नहीं ना आप मेरी बात? है बुला रहे हैं किस भैया को? हाँ। पढ़ाई भी करती है, यूट्यूब पे चैनल चलाती है, 2 चैनल चलाती है। एक का नाम है प्रयागराज स्टूडेंट लाइफ, एक नाम है शॉर्ट यूपी 72। एक मोनेटाइज होगा, एक होने वाला है। अंकित भाई बुला रहे, जाना मत सब लोग। हाँ रूबी बहन मेहनत से होता है, ऐसी दुनिया में कुछ नहीं होता है। सोनम भी काफी दिन से मेहनत कर रही थी। अभी हमने संध्या बहन आपके चैनल पे कमेंट किया था। एक सब लोग टाइम बना लो, वो उनकी लाइफ उतने बजे चलेगी, उनमें सब लोग जाओ, जिसकी लाइफ चले उसमें लाइफ में जाओ सब लोग। हाँ
हाँ भाई आओ लाइव में यार थोड़ा। हाँ अंकित भाई, एक दूसरे के लिए टाइम देना पड़ता है, दिल में जगह बनानी पड़ती है। अब अंकित भाई है। समझ रहे हो ना संध्या बहन? है ऐसे नहीं कि आए बात करके चले गए, आए हो बात करते हो सब लोग, सबका फायदा हो थोड़ा बहुत है। हाँ ये नहीं आए बात करे, टाइम 6 मिनट खर्चा किया। सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की लाइन में आओ। अंकित भाई सब बहनों सपोर्ट करो यार। जब तुम्हारा नाम में सपोर्टिंग वाले भाई रखना पड़ेगा, समझे हो? हाँ अभी सोनम से बात हो रही थी, बता रहे थे अंकित भैया बड़ी हेल्प करते हैं। हाँ। जैसे सोनम बहन को पार कर दिया, हमको पार करा दिया, वैसे संध्या बहन को भी बहुत सागर पार करो अंकित भाई। हाँ अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, सोनम दीदी यूट्यूब बंद है ना, इस समय लाइव में नहीं आ पाती हमारे यहाँ। बात हुई थी अभी, बात कर रही थी यहाँ। स्कूल गई बच्चों को लिवाने यहाँ। समझ रहे हो ना संध्या बहन, जैसे आपकी लाइफ वैसे सोनम की है। हस्बैंड उनके चले जाते हैं सुबह ड्यूटी। यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ना पैदल, फिर लिवा के लाना, फिर खाना खिलाना बच्चों को, फिर कोचिंग ले जाना, फिर कोचिंग से लिवा के लाना है। हाँ ये देखो बहन भूल गई थी आज। हाँ आज 15 दिन बाद रूबी लाइव में आई हो तुम मेरे यहाँ। बहुत हो गया यार अंकित भाई, फिर तो क्लैपिंग क्लैपिंग। हाँ बहुत अच्छी बात यार है। तब तो यार कुछ पार्टी वार्टी होनी चाहिए, क्यों बहन? हाँ 2 दिन में तो माने लगता है यार। हाँ अच्छा वो यूट्यूब वाले वापस तुमने ले रखा क्या वो अपनी मेंबरशिप? हाँ
गुस्सा होंगे होंगे, इतने दिन आओगे नहीं तो भाई चलो एक दिन है, दूसरे दिन तो आदमी आता ही है। तुम तो कह रहे थे हमारी बेटी नहीं है, अच्छा जेठानी वाली बेटी है। हाँ कुछ करो तब आ जाता है। हाँ जैसे किसी का मेहमान कब आते, शादी पार्टी हो तब आते, चैनल मोनेटाइज करवाओ, पेमेंट आए तब आएंगे। हाँ समझे रूबी बहन। हाँ ऐसे ना मामा के पास ऐसे कोई मेहमान कहाँ किसी का आता है, कोई फंक्शन हो वहाँ चैनल सब बहनों के यहाँ जाते भी। देखो कल एक बहन के यहाँ गिफ्ट लेके गए थे। हाँ सोनम, हम समझो अंकित भाई, यूपी प्रांसी क्या लेके गए थे, समझे रूबी, अभी कल भी गए थे एक बहन के घर। हाँ संध्या बहन है, सबके घर भाई आएगा गिफ्ट लेकर के, लेकिन कुछ करो तब, कैसे कुछ करके दिखाओ तू, जाने गाने नहीं सुना तुम लोगों ने। रूबी है, जिंदगी में कुछ हासिल करना पड़ता है, सब लोग आते जाते थोड़ी ऐसे, न तुम्हारे पास टाइम न हमारे पास टाइम है। जाते तो हैं, कब नहीं कि अगर जाएंगे तो वीडियो में कमेंट करेंगे। हाँ सबसे बड़ी बात, तुम लोग फिक्स टाइम पे लाइव नहीं आते हो। सोना को यूट्यूब नहीं चल रहा ना। हाँ देखो कॉलिंग पर कर रहे हैं। लो बोलो अंकित, जोर से बोलो। हाँ अंकित भैया हैं, संध्या गुप्ता बहन है और रूबी निशा, 3 लोग हैं यहाँ। हाँ तीनों लोग पार्टी देने के लिए बोल रहे हैं।
आवाज आ रही है ना संध्या बहन? जनवरी में पार्टी सबको मिलेगी, नए साल वाले दिन 1 जनवरी। 1 जनवरी को मिलेगी सबको पार्टी। सोनम संध्या बहन तो यही रहते ना दुर्गा हॉस्पिटल के पीछे, यही दुर्गा हॉस्पिटल के पीछे। हाँ। असल में कॉल कर लेके मना, पूछ लो, आए सामने बात कर लो, पूछो, बोलो संध्या जी। संध्या जी तो बताओ किस दिन मिलोगे हमारे, किस दिन आप मिलोगे हमें? हमें तो आज पता चला दुर्गा हॉस्पिटल की बात है। हाँ, अभी लिख रहे हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। चलो टाइम मिलना तो बताना है। हम खुद नहीं जानते, तो बहुत दिन बाद जाने पाए हैं। अच्छा, लिख रहे हैं किस, पूछ रहे हैं किस दिन आओगे तुम, संध्या बहन पूछ रहे हैं। जिस दिन का टाइम हो आप बुला लो, उसी दिन हम आ जाएंगे। आपके ऊपर है संध्या बहन, आप कब बुलाओगे सोनम को? हाँ, वही तो, दोनों लोग साथ काम करो, बनाओ वीडियो, देखो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, जिस दिन टाइम हो बताना। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे स्कूल ले आना लिवाना, वैसे संध्या गुप्ता के भी इनके 2 बच्चे हैं, स्कूल छोड़ना लिवाना काम रहता बस। वो कह रहे जिस दिन तुमको टाइम हो, जिस दिन तुमको टाइम हो। तुम्हारे पास सोनम कब टाइम है फिर? कल बना दे, मैं कल परसों 2 दिन बात करिए और फिर के बाद बता। चलो मंडे तक रखना है, क्या नहीं है? हाँ, संध्या गुप्ता जी बारात कराएं तब फिर सोनम इनको भी थोड़ा ढंग से, संध्या गुप्ता की बहन सपोर्ट कर देना इनका। हाँ, इनको फेसबुक में करते हैं सपोर्ट, करने लगे हैं, बाकी हाँ। उसमें तो हम जा नहीं पा रहे हैं यूट्यूब पर। हमने तुम्हारी आईडी पारस भैया को उनको भेज दिया है। हाँ, सूरज लोधी को। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तुमको नहीं सोनम मालूम था कि संध्या बहन यही है? नहीं, उनको नहीं मालूम था। बात तो काफी हो रही है, लेकिन पूछा नहीं हमने कहाँ से हुआ। हम भी बहुत दिन बाद एक बताया था कि हम यही पास में कहीं कल्याणपुर में, हम कहीं कहीं दूर होगी, लेकिन दूर नहीं, हमारे घर के, हमारे घर से दुर्गा हॉस्पिटल बीच में रहती है। अच्छा, तो जब मिलो आप जाते आते जाते हैं, उस दिन थी यहाँ बैठी थी, उतने दिन मिल लेती, तो ध्यान नहीं दिया था। जब मालूम है आपको? घर तो नहीं बोल, लेकिन गली तो मालूम है। हाँ, नंबर मालूम है, घर मालूम है तब ना। नहीं नहीं, वो फेमस है ना यहाँ, तो पुराने लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना। अच्छा ऑटो चलाते हैं ना इनके हस्बैंड जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फेमस हो। अच्छा, हम ही लोग हमारी गली में किसी से पूछो बता देंगे उनका घर कहाँ। अब संध्या बहन आएंगे जल्दी सपोर्ट करने के लिए सोनम आपका। हाँ, बोलो अंकित भाई। जुड़ी है फेसबुक में, करते हैं लाइव। किसी टाइम फेसबुक का भी लाइव अपना शुरू करो। हम हाँ देखो टाइम कर रही है। शादी करा उसके बाद एक फिक्स टाइम रखो, उस टाइम पर आओ जरूर चाहे। अब असली मेहनत तुम्हारी अब शुरू होगी। हाँ, अभी हाँ 6 महीना रखते मेहनत करनी पड़ी। संध्या गुप्ता जी थैंक यू बोल रहे हैं आपको। हाँ, घर आएंगे वही तो थैंक यू बोलना। तो पास ही में रहती हो तो घर आएंगे। उस दिन वही तुम यहाँ बैठी थी, जब रिक्शा नहीं उतनी देर में मिला थी इनसे, क्या नहीं है? हाँ मालूम है नहीं। ध्यान नहीं, तो हमको तो मालूम है यार सब कुछ। अच्छा, इन लोगों को भी सोनम मोनेटाइज करवाओ, चैनल है, बहुत इनसे मेहनत कर रहे हैं ये लोग भी।
चलो ठीक है, अच्छा काम कर लो फिर। हाँ ठीक है। बोलो अंकित भाई। बोलो अंकित भैया। अब देखा अंकित भैया, संध्या भाई ने, अंकित भाई ने हमारा सपोर्ट किया, सोनम भाई सपोर्ट किया, लेकिन खुद की मेहनत करनी पड़ती है, खाली सपोर्ट से नहीं काम होता। अंकित भाई चाहे जितनी सपोर्ट करते, अगर हम ना मेहनत करते, ना सोनम भाई मेहनत करती, तो ना होता है। अंकित भाई पार्टी देना अब यार। हाँ, फाइव के बहुत होता है। हमारा 2K हो पाया है बस, हाँ, 4-5 साल में। किसी काज में का अंकित भाई हर बहन यूट्यूब फेसबुक पे फेमस हो। हाँ, फर्स्ट जनवरी में बोली सोनम दीदी। हाँ,
नए साल में पार्टी देने को बोल रहे थे। अंकित भाई सब बहनों की हेल्प करो। हाँ, जैसे सोनम बहन ने किया है। जैसे सोनम बहन की वैसे प्रिया बहन, रूबी बहन, सब बहनों का फिर सब बहनों की घर गिफ्ट लेके जाएंगे। हाँ, संध्या बहन गिफ्ट अभी रखा है वो। हाँ, ट्रॉफी है। नहीं रुको अभी संध्या बहन थोड़ा। ठीक ठीक ठीक, आना जरूर बहन। हाँ, स्वागत रहेगा, वेलकम बैक। हाँ, इधर रहो, बाहर रहो, बाहर बाहर जाओ।
हो गया, जिसे मैंने चाहा बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या
वो सेम जो है गुड इवनिंग, कैसे हो पिंटू कुमार जी? वेलकम माय लाइव स्ट्रीम। बोलिए पिंटू। हस्बैंड जी के साथ वीडियो बनाओ। माचा पैसे दे क्या 40 रुपए दो पहले दे। समझा करो 20 रुपए की बत्ती लग गई इसमें, हाँ? अरे यार माचा है ना ऑनलाइन करोगे ऑफलाइन करोगे? ऑनलाइन करेंगे हाँ, तो कल करेंगे नहीं ऑफलाइन कर दो, तुम्हारे कल वाले चक्कर छोड़ो। मानो है माचा बिना पैसे के नहीं, न होता पेट न होती भेंट। हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं आपके। इसमें कम नहीं चलेगा हाँ हाँ, 20 रुपए की बत्ती लग गई उसमें, हाँ। बत्ती बिजली, हाँ, इलेक्ट्रिक। माचा यार कपड़ा सिलवाना है और ठीक है ले आना, डालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना है। अरे तो टाइम टाइम तो कभी सहालक है ना यहाँ। ले बोलिए चेंज के तैयार है, हाँ ले आओ कल चेंज दो। हाँ, हमारे पास है 200। मेरे पास नहीं है। अरे भाई माचा दे भूल गया ने वो तो है जरूरी आ रहा है। माचा का कोल्ड नहीं पिला देगा मौसम ठंडा है नहीं। और कौन साथ में है दिखाओ सबको। क्यों माचा यार कोई पैरदार मिलेगा बताओ यार हाँ मिल जाएगा, कल्याणपुर में मिलेगा। कितने तक का मिलेगा मिलेगा 2000 तक। 2000 का हाँ, पटरा पैरदान सब ना। हाँ हाँ यार माचा बात करो कि दिलवा कोई बढ़िया हो ठीक ठीक। मशीन है? मशीन कितने की आती है हाँ, इंटरलॉक की मशीन कितने की आती है इंटरलॉक मशीन 3000 की। 3000 की हाँ, तो मास्टर एक इंटरलॉक की मशीन रखवा ले हम हाँ। इंटरलॉक किया करें और जितना कपड़ा हुआ करे इंटरलॉक का मेरे यहाँ भेज दिया करो अच्छा, मैडम कल चला लेती मशीन? कौन हम आपको मैडम? मैडम नहीं हम चला लेते हैं अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात यार है। आओ सही मास्टर 40 हमको ला दो। तुम्हें 40 दे रहे ना 40 कहा तुमको 40 दे दी होल्डिंग पैसे नहीं दोगे? तुम्हारा नोट तुम्हें देंगे यार मास्टर ये हम लोग चल जाएंगे, आप कोई दिक्कत पड़ेगी। हाँ दिक्कत पड़ेगी अभी शाम तक इनको दे देंगे फिर वापस। अब यार मास्टर बैठे हैं तो बैठो बस। मास्टर सागर कुर्सी ले लो, मास्टर वहाँ पे सागर कुर्सी ले लो यार बगल। मसाला खाओ तो भाई मंगा लो मसाला नहीं, चाय पिलाओ अगर पिलाना। लो मास्टर चाय मंगा मंगा कहीं बगल में दे दो, मिल जाएगी। ले लो पैसे राजा। 10 की चाय ले लो। 10 में 3 का 15 दो राजा। बढ़िया थोड़ा चाय बनाना इनके मास्टर साहब के लिए। मास्टर बात
आज मास्टर की दुकान की चाय पड़ोसी 15 की। पटारा की तीन कस्टमर आए तीन वहाँ देखिए नहीं है तीन मेरे तीन कस्टमर आए चाय बनाओ अंशु भैया भी पियेंगे? हाँ पूछो, पियो भैया चाय। अंशु भैया अब खड़े हैं तो भैया पिएंगे चाय। नहीं, वो जो आए हैं बेटे। क्या कर रहे हो? उठो। अभी पिए हो शायद। हाँ चाय चाय पिएंगे चाय मास्टर जी मकान में है आपका घोड़ा वाली गली। थोड़ा वाली गली में अच्छा मकान का झोपड़ी है यार। लेकिन मास्टर आप दिखते नहीं वहाँ पे आप दिन भर तो यही रहते, रात में जाते बस। संडे को नहीं दिखते हो संडे को आ जाते हो क्या हाँ, अच्छा बंद नहीं जाते हो किसी दिन गरीब आदमी के लिए संडे मंडे का मतलब। यार मास्टर जी बात मत किया करो यार बड़ा कष्ट होता है ये बात कह देते हो नहीं, संडे आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए थोड़ी संडे। ये बात कहते हो मास्टर बड़ा कष्ट होता है यार वो एक लड़का सुमित सुमित आपके आसे पास में रहता है, शर्मा। सुदामा के आस पास कहीं रहता, सुमित शर्मा नाम लड़के। मेरी गली में सहमत कोई नहीं बकरी देखो कहाँ चली गई हैं। ओके ना चोरी स्पॉट है तो बड़ा बढ़िया कर ये स्कूल में आपको अपनी कार से जाना चाहिए मास्टर साहब यार। हैं? अरे यार मास्टर हाँ, कार ले गया मास्टर साल तो चलो कार लेने में बड़ा रुपया लगता है मास्टर हाँ लेकिन 2 रुपए की कार थोड़ी ना आती है ना 2 लाख की आती है हाँ लेकिन तुम लोग देती थे सरकार की मतलब कार से आओ। हैं? हमारे मित्र हैं यहाँ, सब कार से जाते हैं, सब टीचर हैं। ये ठीक है, सामने गली में घर है। कहाँ जाते हैं ना नहीं, इधर मैसे तरफ जाते हैं, आदित्य कुशवाहा जानते होगे। अच्छा गोरे गोरे से है हाँ, हाइट कम है थोड़ा। हाँ 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 हाँ, मित्र हैं हमारे वो, कार। अच्छा अच्छा मैं इधर लगता हमारा भी पड़ता है अच्छा। कभी बाइक से कभी कार से है। बड़ा रिक्स है साहब वो होता है ज़्यादा बाइक से जाने में 5 रुपए आपके यहाँ दुर्गा तक ले लेता होगा ऑटो वाला, कि घर से उठाता है? नहीं हाँ, वहाँ से यहाँ कभी पैदल आ जाते हैं कभी रिक्शा भी चल जाते हैं वहाँ से सारा 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है वो दिक्कत करता होगा। जहाँ जो करते हैं लोग हाँ, पैसा बचाओ, डायरेक्ट करो। हमारे मैडम है और ये जाती स्कूल से उठाता है गेट पर। अरे तो हमारे आने का कोई समय नहीं रहता है ना अब आप तो आ गए जल्दी नहीं कभी कभी जो है काम आदि चल जाए तो काम 6 बज जाए तो क्योंकि हम लोग फील्ड वगैरह काम रहता है मास्टर माता जी है क्या ये नहीं माता जी बोले गए हाँ, अभी फरवरी में तो। अगले साल फरवरी में हाँ, इसी फरवरी मतलब जो गई है पीछे। फरवरी आ जाएगी 1 साल हो जाएगा
माता जी यहीं रहती थी क्या? उधर मास्टर कल भूल गया यार आपको। कैसे? अचंभव हो गया। हाँ। बाल असल कटवा बाल दिए तो ना ठीक आपने। बाल कटवा दिए ना आपने। ये बाल बड़े बड़े थे। बाल बड़े। फिर कल हमारे अचंभव पड़ गए। हाँ। अच्छा अच्छा जी। माता जी विस्तार हो गए थे, बनवा दिए थे ना, इस बार नहीं बनवाते। हाँ वही तो फिर कल हम अचंभव में पड़ गए। मास्टर तो बाल बड़े हो गए। नहीं कटवा भी तो होंगे। गंदे होने पर हम ही ने किया था ना, हमारे पास रहती थी तो हम ही ने किया था ना। नहीं इसके बाद फिर कटवाए नहीं जब से। नहीं तो एक बार कटाए थे हाँ हम। वही तो कह रहे हैं। एक साल बहुत बड़े बड़े जब पाए। उस साल दाढ़ी ज्यादा बढ़ गई बालों के हिसाब से। अब माता जी थी इसलिए बनवाए थे, अब दाढ़ी कभी नहीं बनवाएंगे हम। अपने हिंदू रीति होता कुछ नहीं, लेकिन अब हिंदू रीति रिवाज है, उसका चलना पड़ता है। हमने कभी मूछ नहीं बनवाई थी। हाँ। लेकिन पिताजी एक्सपायर हुए थे। तो दाढ़ी मूछ बाल सबे कटवा दिया था। जब सब बनवा दिया तब कभी मना अब दाढ़ी मूछ नहीं। सही है। तब तो मूछ नहीं रखी। कोई दाढ़ी क्लियर रखो, मुझे लेसन करो, ये करो वो करो। हम भी पहले मुझे रखते थे, दाढ़ी में तो मुझे रखते थे। सीधा क्लीन शेव कर दो। बड़े दिन बाद यार मुलाकात हुई मास्टर जी। कपड़े बनाने आए सब कुछ हुई। तब आई थी। चलो जल्दी मुलाकात होगी। मुलाकात कितने दिन बराबर लगेगा, 8 दिन लगेगा। नहीं 3 दिन 24 दिन। कल जाएंगे 1 तारीख को बड़ा तो 2 को वापस आ जाएंगे। चले आ मास्टर चाय चाय गिलास तो पी लिया हमने। आ जाएगा किस में। आ जाए ना, जैसे पकड़ लो अपने काम को दिखा करो। नहीं आ गया मास्टर। मास्टर मच्छर बहुत पानी का चक्कर है। रात में मैंने बैठे हैं ये अंदर सब पानी बहुत। अच्छा मास्टर बस उतरा का बहुत ही। मैडम इंतजार कर रहे होंगे कहाँ रुक गए हैं।
क्या मेरे लाइन में मेरे यहाँ शोर हो रहा है, इसीलिए आवाज बंद किए हुए माफी चाहते हैं।
अब अप्रैल में एक शादी थी हमारे यहाँ, समझो। अगर अप्रैल तक हो गया, बहुत जल्दी जाएगा। एक हमारे साढ़ू लड़के की है ना, मतलब अप्रैल में सालों की लड़की, साढ़ू साढ़ू की लड़की, लड़की वाले थोड़ी, नहीं नहीं लड़का की, लड़के वाले। अप्रैल में है। हाँ हाँ जब तक आ जाएगा मार्च अप्रैल, ये कोई 15-20 दिन में काम हो जाए फ्लैट वाला, महीना भर मान लो दिसंबर भर में हो जाए। हेलो।
राधे राधे। राधे राधे। बजरंग बली ने जब लंका जलाई और पूछ बुझाने के लिए समुद्र में जब गए तो पसीना की बूंदें समुद्र में टपक गई। मछली ने वो बूंदें पी ली और मकर पैदा हुआ। तो मछली ने वो बूंदें समुद्र में ढूंढ कैसे लाई? पसीना तो पानी मिल जाता है, कर्मचारी का हो चाहे कमार का हो, पसीना तो पसीना आता है ना। उसमें तेज कहाँ से आ गया पसीना? और मछली मुंह वहां से बैठी नहीं गिर गई पूछ। और मछली की एक प्रकृति होती है, कट सिवाय करी चली जाती है। और जब पूछ बजा रहे थे तो आवाज तो वही होगी पानी की। कल काटने की है तो मछली ने बूंदे कैसे बूंदे जो मकर से पैदा हुआ। हमें खुद नहीं पता, खुद ढूंढ रहे हैं। सही में बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, मिले नहीं रहा। यार इसका कोई जवाब नहीं, लिखित में तो है नहीं। लिखित में कहीं नहीं, तो वही तो मिल नहीं रहा। या तो कोई भगवान, या तो वो भूखी मरी होगी। नहीं तो पहले तुलसीदास ये लिखते जब पसीना की बूंदें मछली के मुंह में चली गई, उन्होंने तो ये लिखा है मछली ने कैसे कहा? जाती कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा था। लेकिन इतने बड़े सागर में मछली ने बूंदे कैसे ढूंढ रही बजरंग बली पसीना से पीने की? तुलसीदास ने लिखा है जब बजरंग बली मुख को आग लगाई गई तो इतने कपड़ा लपेटे गए, इतने कपड़े लपेटे गए कि लंका के कपड़ा खत्म हो गया। कपड़े का निर्माण कब हुआ है? कपड़े की खोज कब हुई है? जिस समय लंका जली तो उस समय आग की खोज नहीं हुई थी, आग की भी खोज नहीं हुई थी जब लंका जलाई थी। कपड़ा की तो बात छोड़ दो, आप तो इसका मतलब मान ही नहीं रहे हो। बात मानने की नहीं है, बात मानने की है ही नहीं। लोग खाना कैसे खाते थे, अग्नि बाण मारते थे तो कैसे निकलते थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो हम कह रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं। हम मतलब तर्क नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे कपड़ा आया कहाँ से। आज शनिदेव को, दुनिया के देवी देवताओं को श्रृंगार से लाद दिया जाता है, ठीक है। तुलसीदास ने लिखा है सोने की लंका जल के राख हो गई। सोना जलता है, सब चीज अलग है। इस्तेमाल कर वो सोने में मिलावट होती है तब भस्म भरपूर आ रहा है। भाई समझ में नहीं आता तो पूछते भाई बताओ इसका कारण क्या है। हम उस चीज को माने तो तर्क संगत है। पुराण में तो लिखा है अगर इसके अनुसार चले तो जीवन सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अनुसार चल ही नहीं सकते आप। क्यों नहीं चल रहा है? चलने वाले लोग चल रहे हैं, जीवन सफल कर रहे हैं। श्री कृष्ण गीता ने ये कहा है जो कुछ होता मैं कर रहा हूँ, भगवान भी कुछ होता ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है जो कुछ है मैं कर रहा हूँ। तो अगर अब बच्चा खत्म हो जाए तो रोटी का है। ईश्वर ने कहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, रोने की जरूरत है। अब बताओ अगर मतलब गलत हुआ माया नहीं लिखती है कि हमने उसको पैदा किया है। अरे यार जब माया लिखती है तो फिर इसका मतलब आप गीता मान नहीं रहे। क्यों नहीं मानना? माया छुट्टी नहीं आपकी, हाँ तो माया नहीं लिखती है। तो इसका मतलब गीता का अगर मानते माया नहीं। छूट गई तो हम भगवान नहीं इसका बनेंगे। मतलब आप गीता मानते ही नहीं। काहे नहीं मानते? अरे ये भी बात है यार, मना भी पिएंगे और मतलब ठंडा भी नहीं चाहिए। भाई गीता तो मान रहे हैं। हाँ जो लोग नहीं मान रहे वो लोग छोड़े तो हैं घर, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं छोड़े। तो महाराज जी नहीं छोड़े, प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी तुम्हारे वो
संत पुरुष हैं उनकी बात छोड़ दो, चलो उन्होंने छोड़ दिया। अब जनता की बात करो। और उनके साथ में जो लगे हैं, जो टीचर जनते जो एयरफोर्स और ये सब जो लगे हैं, ये सब एक एक कमांडर एक एक अचला के लिए परेशान है, संतों की बात नहीं करो, एक एक अचला के लिए परेशान होते हैं। जब फल कर्म से ही मिल रहा है, जब कर्म के अनुसार ही हमें फल मिल रहा है, तो हम पीले कपड़ा पहले चिंता काय बजाते हैं। फिर जब फल हमें हमारे कर्मों से ही मिलेगा, तो कर्म सुधारने हम पीले कपड़ा लेकर चिंता काय बजाते हैं। आजकल संतों की महिमा है, आजकल पीले कपड़ा तो पीले कपड़ा पहनने एकदम आ रहे जा रहे हैं, पर फिर मम्मी तो का भाई आदमी के अंतर भावना तो ये भी समझो। अब सही हो, अब सही है ना। और कुछ ऐसे भी संत पीले कपड़ा पहन करके भाई साहब आपसे मांगे
मांगेंगे नहीं और जाएंगे तो 4-5 घर में मांगा, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो मैं कुछ की बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। जो ज्यादातर सब ऐसे ही है, जो पीले कपड़े पहन करके काम करते हैं, ज्यादातर ऐसे। तो जो ज्यादा कर रहा है कम अच्छी कर रहा है, तो जो ज्यादा कर रहा है उन्हीं की तो मानी जाएगी, कम की बात नहीं। पता चल क्या चलेगा, क्या है करा, कैसे पता चलेगा? पूजा लेते दृष्टि ये आदमी झेल रहा है। अभी भी लोग, बहुत लोग मानते हैं भैया।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम सिया राम जय जय राम। राम राम। क्या हुआ? कमल नीचे रख दो, ठीक। ऊपर देखो तो ऊपर रख दो। इधर रखो, गिर जाएगा। ऊपर रख दो कमल। तब तो कैसे मम्मा करो, तब तो उसको आ रहा। मैंने कहा था ये नीचे पड़ेगी, साफ कर लो। ऐसे कतरन से कहाँ साफ हो जाएगा? साफ हो जाए और काम। बड़ा अभी नहीं पड़ा, उसे कर लो आज, फिर देखो देखेंगे। लाइट नहीं आ रही थी आज। इसमें वो रखा है स्टेबलाइजर है। मास्टर का कुर्सी ले लो, टाइम हो गया चलने। प्यार हमारा हमारी रहेगा, प्यार हमारा। हाँ हाँ, फिर आपको फिर चला आवाज आज फिर यही करो बस। हाँ अभी नहीं, अभी पहले स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले अभी स्टेप पूरा करो तुम। रोको, चलाते रहने जाया करो, रोको चल जा फिर, चल जा फिर। ठीक, राधे राधे।
थोड़ा सा काम बचा है बस।
क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। फिर के देखो दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है।
का मगर क्या करूं मैं, मेरे आंसुओं से लो मुस्कुराना, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। रोका करो, चलाते मत रहा करो, ठीक है? ठीक, रोक रोक के चला करो, रोक रोक के चलाओ, फिर रोक दो बिल्कुल। हाँ, एक बार बताते हुए समझ जाया करो, थोड़ा चलाओ फिर रोको, फिर चलाओ फिर रोको। राधे 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 राधे। किसी का है मौका मगर क्या करूं मैं। हाँ, रोज रोज बढ़ी रही। हमने तो अभी जैकेट वैकेट निकाले नहीं हैं। आठ 10 दिन में बिल्कुल भयंकर पड़ने लगेगी है।